dear students, today we are going to discuss the syllabus of education UGC NET paper 2 unit 1 to 5 we have discussed in our last video. Today we are going to discuss unit 6 to 10. So let's start unit 6. So here you can see यूनिट 6 इज रिसर्च इन एजुकेशन. तो ये रिसर्च जो यूनिट है हमारा, ये टॉपिक हमारा पेपर 1 में भी है. अगर आप पेपर 1 में प्रिपेयर करते हो तो उसमें आपको यहाँ पे यूनिट पेपर 2 में आपको हेल्प हो जाती है. अगर आप पेपर 2 में इसे प्रिपेयर करते हो तो आपकी पेपर 1 में भी हेल्प हो जाती है. काफ़ी सारे इसमें टॉपिक सेम है. सो लेट्स सी इसमें आपको क्या प्रिपेयर करना है. Meaning and scope of educational research, meaning and steps of scientific method, characteristics of scientific method like applicability, precision, falsifiability and parsimony. Then types of scientific method like exploratory, explanatory and descriptive. Aims of research as a scientific activity, problem solving, theory building, prediction. Types of research like fundamental, applied and action. Approaches to educational research, quantitative and qualitative. Designs in educational research, descriptive, experimental and historical. Then we have to learn about variables. Meaning of concepts, constructs and variables. Types of variables like independent, dependent, extraneous, intervening and moderator. Then hypothesis we have to learn, concept, sources, types, research, directional, non-directional, null. So these are types of hypothesis. Formulating hypothesis, characteristics of a good hypothesis, steps of writing a research sample, types of steps of writing a research proposal, not sample, concept of universe and sample, characteristics of a good sample, techniques of sampling, probability and non-probability sampling, tools of research, validity, reliability, standardization, types of tools, rating scale, attitude scale, questionnaire, aptitude test and achievement test, inventory. Then we have techniques of research, observation, interview, projective techniques. Then C part is types of measurement scale, nominal, ordinal, interval and ratio. This is also very important. बहुत सिंपल है लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है और बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है. Then quantitative data analysis, descriptive data analysis, measures of central tendency, variability, fiduciary limits and graphical representation of data. Testing of hypothesis, type 1, type 2 errors, levels of significance, power of statistical test and effect size, parametric techniques, non-parametric techniques, conditions to be satisfied for using parametric techniques, inferential data analysis, use and interpretation of statistical techniques, correlation, t-test, z-test, ANOVA, chi-square, equal probability and normal probability hypothesis, qualitative data analysis, data reduction and classification, analytical induction and constant comparison, concept of triangulation. Then we have qualitative research design. इस पे आपका पूरा एक यूनिट है जिसमें आपको ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में डिटेल में पढ़ना है. ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिजाइन, स्टेप्स इन conducting a
ground theory research, strengths and weaknesses of ground theory, narrative research designs, meaning and key characteristics, steps in conducting NR design, case study, meaning, characteristics, components of a case study design, types of case study design, steps of conducting a case study research, strengths and weaknesses, then an ethnography, meaning, characteristics, underlying assumptions, steps of conducting ethnographic research, writing ethnographic accounts, strengths and weaknesses, mixed method design, characteristics, types of mixed method designs, triangulation, explanatory and exploratory design, steps in conducting a mixed method design, strengths and weaknesses of mixed method research. तो ये सारा आपको यूनिट 6 में रिवाइज करना है और खूब प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। इसमें क्योंकि स्टैट भी आ जाती है तो आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। और इम्पोर्टेंट यूनिट है ये, जो आपको आगे पीएचडी में तो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। यूनिट 7, ये थोड़ा इजी यूनिट हो जाता है और छोटा भी है ये। पेडागॉजी, एंड्रागॉजी एंड असेसमेंट। पेडागॉजी, pedagogical analysis, concept and stages. Critical pedagogy, meaning, need and its implication in teacher education. Organizing teaching. Memory level given by Herbartian model. Understanding level given by Morrison teaching model. Reflective level, Vijay and Hunt teaching model. Concept of andragogy in education. Meaning, principles, competencies of self-directed learning. Theory of andragogy given by Malcolm Knowles. The dynamic model of learner. Autonomy. Then B part is assessment. Its meaning of assessment, nature, perspectives, assessment for learning, assessment ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग होगा, यहाँ पे ये ऑफ गलत प्रिंटेड है इसमें। तो टाइप्स ऑफ असेसमेंट, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव, रिलेशंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स, असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव, एंडरसन एंड क्रेथवॉल, अफेक्टिव, क्रेथवॉल एंड साइकोमोटर डोमेन्स बाय R.H. Dev of learning. C part, assessment in pedagogy of education. Feedback devices like meaning, types, criteria, guidance as a feedback devices, assessment of portfolios, reflective journal, field engagement using rubrics, competency based evaluation, assessment of teacher prepared ICT resources, assessment in andragogy of education, interaction analysis, Flanders interaction analysis, Galois system of interaction analysis, recording of classroom events, construction and interpretation of interaction metrics, criteria for teacher evaluation, product, process and presage criteria, rubrics for self and peer evaluation, meaning, steps of construction. तो ये हमारा सारा हो जाता है यूनिट 7. Now let's move to unit 8. इसमें हमारा है टेक्नोलॉजी का, कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन में और कैसे एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, information technology, communication technology and information and communication technology and instructional technology, application of educational technology in formal, non-formal, open and distance learning, informal and inclusive education systems, overview of behaviorist, cognitive and constructivist theories and their implication to instructional design by Skinner, Piaget, Ausubel,
Brunner, Vygotsky. Relationship between learning theories and instructional strategies for large and small group, formal and non-formal groups, right? B part is systems approach to instructional design, models of development of instructional design like AD, Ashore, Dick and Carey model, Mason's model. Gagne's 9 events of instruction and 5 E's of constructivism. ये सब आप उसमें भी स्टडी करते हो पेपर 1 में यूनिट 1 में. Gagne's 9 events of instruction and 5 E's of constructivist, 9 elements of constructivist instructional design. Application of computers in education like CAI, computer assessed instruction, computer assessed learning, computer based teaching. तो ये CML concept, process of preparing ODLM, concept of e-learning, approaches to e-learning, offline, online, synchronous, asynchronous, blended learning, mobile learning. तो ये सब टेक्नोलॉजी का जो यूज होता है एजुकेशन में उसके बारे में आप इसमें स्टडी करते हो. Emerging trends in e-learning, social learning concept, use of Web 2.0 tools for learning, social networking sites, blogs, chats, video conferencing, discussion forum, open education resources, Creative Commons, massive open online courses, concept and application, e-inclusion, concept of e-inclusion, application of assistive technology in e-learning, quality of e-learning, measuring quality of system, information, system, service, user satisfaction and net benefits, D&M IS Success Model 2003, ethical issues for e-learner and e-teacher teaching, learning and research. ठीक है. नेक्स्ट इज यूज ऑफ आईसीटी इन इवेल्युएशन. मतलब जब हम इवेल्युएशन करते हैं तो उसमें आईसीटी का क्या यूज है एडमिनिस्ट्रेशन में, रिसर्च में. फिर आजकल जो ई पोर्टफोलियोज बनते हैं आईसीटी फॉर रिसर्च, ऑनलाइन रिपोजिटरीज एंड ऑनलाइन लाइब्रेरीज, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन असेसमेंट टूल्स, online survey tools or test generators, concept and development. Okay, now let's move to unit 9. Unit 9, educational management, administration and leadership. एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा आ जाता है मीनिंग, प्रिंसिपल्स, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, POSD, CORB का पूरा एब्रिविएशन करेंगे, CPM, PERT, मैनेजमेंट एज अ सिस्टम, SWOT, एनालिसिस, टेलरिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ब्यूरोक्रेसी, human relations approach to administration, organizational compliance, organizational development, organizational climate. Its B part is leadership in educational administration, meaning and nature, approaches to leadership, trait, transformational, transactional, value-based, cultural, psychodynamic, charismatic, models of leadership, Blake and Mountains, managerial grid, Fiedler's contingency model, tri-dimensional model, Hersey and Blanchard's मॉडल, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी. तो ये सब आपको मॉडल्स इसमें लीडरशिप के लर्न करने हैं. Then we have concept of quality and quality in education, Indian and international perspective, evolution of quality, inspection, quality control, quality assurance, total quality management, Six Sigma, quality gurus like
वाटर शेवर्ड, एडवर्ड डेमिंग, सी के प्रहलाद, तो ये हमारे क्वालिटी गुरुज माने जाते हैं. Then we have change management. Its meaning, need for planned change, three-step model of change like unfreezing, moving, refreezing. Japanese models of change, just in time, Bokayoka, cost of quality, appraisal costs, failure costs, and preventable costs, cost benefit analysis, cost effective analysis, Indian and international quality assurance agencies, objectives, their functions, their roles and initiatives. The National Assessment Accreditation Council. National Assessment Accreditation Council, Performance Indicators, Quality Council of India, International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education. तो इन सब का फंक्शन क्या है, क्या काम है इनका एजुकेशन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप में, तो वो भी हम इसमें करेंगे. नाउ लेट्स मूव टू लास्ट यूनिट, अवर यूनिट 10, इंक्लूसिव एजुकेशन. तो इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे. व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, क्या स्कोप है, एंड टारगेट ग्रुप्स लाइक डाइवर्स लर्नर्स इंक्लूडिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज. तो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन में सब इंक्लूड होते हैं, डाइवर्स लर्नर्स, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप और लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज, नॉट ओनली लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज. जनरली हम यही सोचते हैं ना कि इंक्लूसिव एजुकेशन में लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज है, नहीं, इसका स्कोप ब्रॉड है. ठीक है. इवोल्यूशन ऑफ द फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव लीगल प्रोविजंस, पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में क्या कहा है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ 1992 में क्या कहा, Persons with Disabilities Act 1995, National Policy of Disabilities 2006, National Curriculum Framework 2005, Concession and Facilities to Diverse Learners, Academic and Financial Rehabilitation, Council of India Act 1992, Inclusive Education under Sarva Shiksha Abhiyan, Features of UNCRPD, United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its implication. बी पार्ट में क्या करना है हमें, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड, इनके डेफिनेशंस हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज बेस्ड ऑन ICF मॉडल, readiness of school and models of inclusion, prevalence, types, characteristics and educational needs of diverse learners, intellectual, physical, multiple disabilities, causes and preventions of disabilities, identification of diverse learners for inclusion, educational evaluation methods, techniques and tools. तो ये सब हम पार्ट बी में लर्न करेंगे इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन में. ठीक है. नाउ लुक एट सी पार्ट, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम्स. मतलब जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके लिए क्लासरूम की प्लानिंग और मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस, इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस, curriculum and curriculum adaptations for diverse learners, assistive and adaptive technology for diverse learners, product like aids and appliances and process, individualized educational plan, remedial teaching, parent professional partnership, role of parents, peers, professionals, teachers and school. तो ये सब इसमें हमारा पार्ट सी में आ जाएगा. उसके बाद है कि क्या क्या बैरियर्स आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, बैरियर्स एंड फैसिलिटेट, कौन कौन लोग हैं फैसिलिटेट करते हैं और क्या क्या बैरियर्स रहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, लाइक एटीट्यूड, सोशल एंड एजुकेशनल, ये सब बैरियर्स होते हैं.
current status and ethical issues of inclusive education in India, research trends of inclusive education in India. तो ये सब हम इस यूनिट में करेंगे, ठीक है। और ये सब आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखने हैं। इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, मैचिंग में भी आ जाता है, मैच द फॉलोइंग में। तो ये है आपका यूनिट 10। तो आपको ये अपने सारे यूनिट्स बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।